Okay, Peter. So a quick revision, and then we move towards the further questions of chemical equilibrium. As I said, only the last section of this equilibrium is remaining. Very simple. The definition of a reversible reaction. Yes, you all know that it is the reaction that goes in both directions, called a reversible reaction. P2 में पूछा जाएगा, word for 1 mark. They never ask you to give the example of a reversible reaction. ठीक है, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे. लेकिन in case if they do ask, हमें पता है कि Haber's process is the most common example of a reversible reaction. N2 plus 3H2 forming 2NH3. And then we move towards the dynamic equilibrium, which is the condition in a reversible reaction at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. But at dynamic equilibrium, the concentration of reactant and product are giving you two options, same or constant. Is constant. There's no such condition that the concentration of reactant and product are same. It's always constant. And I gave you the example of Haber's process ammonia. मैंने कहा सिर्फ 17% ammonia form होता है और आपके पास equilibrium obtain हो जाता है. ठीक है? So dynamic equilibrium, there are three conditions for dynamic equilibrium. The first condition, a closed system is required. Means nothing should be going in or coming out of your system. If this is the condition, no dynamic equilibrium can obtain. Okay, so for obtaining a dynamic equilibrium, the system must be closed as the first condition. Second condition, the rate of forward reaction is equal to the rate of. Third condition, the concentration of reactant and product is constant. Okay, देखो, this is a graph which shows the rate of forward and a backward reaction. X-axis पे क्या है? Sorry, y-axis पे the rate of reaction, and you can see the forward reaction initially is maximum, it's going down, decreases, ultimately it become constant. The rate of forward reaction increases, ultimately it become equals to the rate of forward reaction. And this is the condition जो red से vertical line से mark हुआ है. This is a condition of a dynamic equilibrium. This is a graph that gives you the amount of concentration of reactant and product. So initially the reactant की concentration maximum होगी, product की concentration 0 होगी. जैसे time proceed करेगा, reaction at which the both become constant is called the dynamic equilibrium. देखो यहाँ ना एक point है which is this point, है ना? जिसको मैंने अभी सर्कल किया है. This is basically a random point during the reaction at which the concentration of reactant and product is same. लेकिन यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं हुआ, इसके बाद भी रिएक्शन चलता रहा. ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में याद रखिएगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है हाउ वी कैन चेक द रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन और अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड द प्रोडक्ट. तो हमें पता चलेगा कि इनिशियली प्रोडक्ट 0 है, रिएक्टेंट है. कुछ टाइम के बाद कुछ प्रोडक्ट भी होगी, कुछ रिएक्टेंट भी होगी. और अब आप जितनी बार भी इसे चेक करेंगे, यू विल फाइंड सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज्ड अप हो जाते हैं सारे के सारे. दे 100% और 90%, 70% डिपेंडिंग ऑन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. सिर्फ क्या बचता है? प्रोडक्ट और एक्सेस रिएक्टेंट. ठीक है, बट इन अ डायनेमिक रिवर्सिबल रिएक्शन you always find both reactants and all the product every time in your reaction vessel, but the concentration become constant. So if the system, यही वो तीन conditions इनकी बात की, if the system is a dynamic equilibrium, it can be disturbed to regain the equilibrium, and this is called the Lee-Chatter's principle. So there are three definition and one condition they normally asking. They ask the definition of a reversible reaction, they ask the definition of a dynamic equilibrium, they ask the definition of a Lee-Chatter's principle. तीन definition पूछेगा आपसे, and they ask the condition for a dynamic equilibrium. तो तीन condition लिखनी है. Closed system, rate constant, rate same, concentration constant. ठीक है, बात याद रहेगी, एमसीक्यू में मोर यही चीजें पूछी जाती हैं. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओ लेवल्स कांसेप्ट है. If you add more reactant, the equilibrium shift towards product side, start making more and more product, है ना? If you add more product, the equilibrium shift towards left hand side, start making more and more reactant. इसको हमने easy करके पढ़ा है. इजी करके क्या पढ़ा है कि वो सिस्टम ऑलवेज मूव फ्रॉम एक्सेस टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी. ठीक है ना? तो एक्सेस से डेफिशिएंसी की तरफ मूव करता है. इट डिपेंड्स, दे आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि किसमें क्या होगा, और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं. इफेक्ट ऑफ प्रेशर में याद रखिएगा कि सिस्टम ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर मोल साइड टुवर्ड्स द लोअर मोल साइड इफ यू इंक्रीज प्रेशर, है ना?
और इफ यू डिक्रीज प्रेशर तो कम मोल्स से ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। In this chemical reaction, on the reactant side, you have 4 moles of reactant. On the product side, you have 2 moles of product. Okay? If the reaction proceed in a forward direction, the pressure of the system decreases. कैसे? Because 4 moles reactant getting combined together and giving you less molecules of product. तो जब molecules of product less बनेंगे तो pressure कम हो जाएगा। pressure molecules पे depend करता है। And if it goes in a backward direction, the pressure increases. यानी naturally this system move in a forward direction, decrease the pressure, move in a backward direction, increase the pressure. और एक dynamic equilibrium पे एक pressure maintain हो जाएगा। ऐसे ही now this system is a dynamic equilibrium. आपने क्या किया? You increase the pressure. आपने external pressure बढ़ा दिया। And इस increase in pressure को minimize करने के लिए the system will move in a direction where you have less number of moles to decrease the pressure again. आपने बढ़ाया, वो less number of moles की तरफ shift होगा, दोबारा कम करेगा to regain the equilibrium. That's why system always move towards the lower mole side from the higher mole side if you increase the pressure, and vice versa if you decrease the pressure. And there's no effect of pressure on a chemical reaction on which you have same number of moles on both sides. ठीक है ना? H2 plus I2 forming 2HI. This is the example. कहीं ना कहीं होगी नहीं दीवी? ठीक है। If you have the same number of moles on both sides, there's no effect of pressure. नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन O levels में भी हम डिस्कस करते हैं। Let's suppose if you have this chemical reaction, let me just complete it now. I'm going to write it down here. If you have this chemical reaction, H2 gas plus I2 gas forming 2HI gas. This is a chemical reaction. है ना? And we have the नहीं लिखा हुआ होगा, नोट्स में नहीं है, इसका मतलब शायद ना हो। So you can see the number of moles on the reactant side कितने हैं बेटा? 2 moles. And number of moles on the product side 2 moles. सही है? So ऐसे chemical reaction में there is no effect of pressure. नहीं, the system is a dynamic equilibrium. आप pressure बढ़ाएंगे, कम करेंगे, equilibrium पे कोई असर नहीं आएगा। फिर वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में नहीं आएगा ना, वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना? हम सिर्फ वन बाय वन बात कर रहे हैं। क्लियर? सो टेम्परेचर यस नो। सो यहाँ ये बात याद रही ना बेटा, इफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स, वैसे भी हम प्रेशर को वी नॉर्मली प्रिडिक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर बाय लुकिंग एट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड द रिएक्टेंट साइड। ठीक है ना? अब अगर सेम होंगे तो क्वेश्चन ये किस तरफ शिफ्ट होगा, तो आंसर ये है कि किसी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एंड दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ओनली फॉर द रिएक्शन इन विच द गैसेस आर इन्वॉल्व, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर याद रखिएगा, द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है? किसका एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट करता है? फॉरवर्ड। Backward reaction का enthalpy change is always the same in terms of numerical value, but different in terms of direction. यानी अगर overall enthalpy change is -100, this -100 means it is enthalpy change of a forward reaction. The backward reaction should be +100. ठीक है? That's why the system gain equilibrium in a closed system. यानी forward direction में जितनी energy release हो रही है वो सारी की सारी absorb होगी, जब भी तो equilibrium closed system में obtain होगा। वरना तो if you have excess of energy तो सिस्टम क्लोज नहीं होगा, वो बाहर जा रही होगी एनर्जी। डेफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, यू शुड नो दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर। पूरा एंथैल्पी चेंज का चैप्टर हम करके आए। ठीक है? सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर of a reaction in which the forward direction is an exothermic and a backward is endothermic. So on increasing temperature, the equilibrium always toward the side which is an endothermic direction. ठीक है? तो इसमें मुझे बताओ, इस इक्वेशन में on increasing temperature, the equilibrium shift towards the left hand side because the backward reaction is an endothermic reaction. They ask you
describe and explain the effect of increasing temperature on this reaction. Question होगा, describe and explain the effect of increasing temperature on this reaction. तो आप बोलेंगे on increasing temperature will shift towards the left hand side because the backward reaction is endothermic. बस that's the explanation. अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे the equilibrium shift towards left hand side, half answer, half mark. आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. On decreasing temperature the equilibrium shift towards right hand side because the forward reaction is exothermic. ठीक है, clear? So that's how. Catalyst, no effect of catalyst on position of equilibrium. It only helps to attain equilibrium early by equally speeding up the rate of forward reaction and the rate of backward. Without catalyst equilibrium obtain हो रहा है in half an hour. So you have to wait half an hour, equilibrium obtain होगा तो आपके सारे factor activate होंगे and the equilibrium will shift towards the product side and you start getting more product. Rather than if you add a catalyst, तो आपके पास equilibrium foreign obtain हो जाएगा within 5 minutes and right after 5 minutes your equilibrium starts shifting towards the product side, you start getting more and more product. तो ये क्या करता है, ये equally speed up करता है rate of forward reaction और backward reaction को. और इसकी एक जस्टिफिकेशन मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, सो देखिए, यू नो द एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम अभी हम करके आए. सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. लेट्स सपोज दिस इज अ endothermic reaction and this is without catalyst and this is with catalyst. ठीक है, अब देखें, this is the reactant and this is the product. ठीक है, product or react, and this is the activation energy value with catalyst, EA with catalyst. Forward reaction की तो activation energy यही है. What is the activation energy of a backward reaction? है ना, backward reaction की activation energy यहां से लेके यहां तक होगी. If you look at the backward, तो numerically हमें नजर आ रहा है कि backward reaction की activation energy में ज्यादा कमी आई है ना. लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी पहले भी ज्यादा कम थी. देखिए, विदाउट कैटलिस्ट भी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी. तो कंपैरेटिवली रेशियो वाइज सेम डिफरेंस आ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में. पहली भी तो देखे ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी ब्लू वन विदाउट कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड विद कैटलिस्ट ये थी ऑलरेडी पहले भी कम थी. तो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट द रेशियो वाइज द डिफरेंस इज सेम. That's why it's equally speeding up the rate of forward reaction and the rate of backward reaction. Now, you should be able to write down the equilibrium constant expression for any given reversible equation for the case of a homogeneous equilibria. Can you explain what is a homogeneous equilibria means? Homogeneous equilibria in which the reactants and product are in a same physical state. Either all are liquid, either all are gases. ठीक है, so this is the first case in which you have all are liquid, and you can write down the Kc, which is the equilibrium constant in terms of concentration for liquids equation, and for the equation in which you have a gases involved. And the case is quite simple. Equilibrium constant is basically the concentration of product divided by the concentration of reactant. Product over reactant. इसको मैंने justify भी किया था. And the coefficient become power. सही है, क्लियर है. सो कोई भी इक्वेशन दे दें, आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज करना है और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करना है, एंड जस्ट मेक द coefficient of a balanced chemical equation the power, and then you have to do the unit cancellation for it to find out the unit of Kc or unit of Kp. If the number of moles on the product side is equals to the number of moles on the reactant side, then Kc has no unit because the unit get cancelled out. ठीक है, clear? In a similar way, you can see all these Kc expression आप practice करेंगे. Kp is only for gases, and this is for the equations in which you have all gases involved, and we write down Kp in terms of a partial pressure. Partial pressure is basically the pressure exerted by any gas in a mixture of gases. We have three gases A, B, C.
The total pressure of the system is basically the sum of the pressure exerted by gas A, exerted by gas B and gas C. इन सबके प्रेशर को एड अप कर लोगे, टोटल इंटरनल प्रेशर बन जाएगा. नाउ the contribution of pressure exerted by gas A is called partial pressure of gas A. ये डिपेंड करेगा कि बेसिकली A के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं and what is basically the mole fraction of A. Higher the mole fraction of any gas, greater would be the partial pressure. उसका contribution total pressure में ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं. पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए we multiply the mole fraction of that gas with the total pressure. और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूडिंग दैट गैस. तो ये जरा देखिए यहाँ पे, partial pressure of gas A is equals to number of moles of gas A divided by the total number of moles of all gases multiplied by total pressure. ठीक है, and when you add up the partial pressure of all gases then it will be equals to the total pressure of the system. ठीक है, now make sure that you write down the Kp expression correctly, because in Kp expression do not use the sign of a square bracket, है ना, it's always in terms of a partial pressure. आप ब्रैकेट ना भी यूज करें तो भी इक्वेशन ठीक हो. पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होता है इट्स बेसिकली आइदर एटमॉस्फेरिक होता है, पास्कल्स होता है और क्लो पास्कल होता है. ठीक है, आइदर एटीएम, क्लो पास्कल और पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. क्लियर? सो केपी की एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए. फैक्टर इफेक्टिंग केसी केपी में जस्ट रिमेंबर वन लाइनर आंसर. द वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी इज ओनली इफेक्टेड बाय temperature. ठीक है, for an endothermic reaction Kc Kp increases with temperature, for an exothermic reaction Kp Kp decreases with temperature. ठीक है, clear? So सिर्फ one liner equation आंसर याद रखिएगा. The value of Kc and Kp is only affected by temperature. ठीक है, clear? उसके बाद homogeneous equilibria की तरफ हम गए और heterogeneous equilibria, sorry, heterogeneous equilibria में this is the type of a chemical reaction in which you have either solid with liquid, gas with liquid, gas with solid, whatever it is. बस एक की पॉइंट याद रखिएगा कि solid can never be a part of a Kc और Kp expression. Solid कभी भी उसका पार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो सॉलिड को अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इफ यू हैव अ लिक्विड विद सॉलिड, आप सॉलिड को हटा के लिक्विड के लिए केसी लिख देंगे. गैस के साथ सॉलिड होगा, आप गैस सॉलिड को हटा के गैस के लिए केसी लिख देंगे. If you have a chemical reaction in which you have a liquid and a gas involved, that's very important. In this case, if you have to write down the Kc, only take liquids. If you have to write down the Kp, only take gases. कर लोगे मसला नहीं. ठीक है, क्लियर? अच्छा, जैसे ये था, मैंने कहा राइट डाउन द केपी एक्सप्रेशन. यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन इन व्हिच सॉलिड एंड गैस इज इन्वॉल्व. ठीक है, so the kp expression only include the partial pressure of the only gas that we have, which is carbon dioxide gas, and then the calculation based on kc and a kp. इसकी calculation practice हमने कर ली थी, अभी और करेंगे. एसिड बेस इक्विलिब्रिया ऑनवर्ड मैं रिवीजन करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द इक्विलिब्रियम, सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर टाइट्रेशन कर्व. ठीक है, उससे पहले उसके इसके अलावा इसमें दो चीजें रह गई. टाइट्रेशन कर्व रह गया, एक पार्टीशन कोएफिशिएंट का टॉपिक रह गया. सही है, इन दो टॉपिक को कवर अप करना बाकी है. तो हम पहले इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब हम कर सकते हैं, इससे पहले हमने नहीं किए थे. ठीक है, ये तो हम कर चुके थे. रिमेंबर acid base equilibria, yes, we done this one. Have we done this one? नहीं किया ना, ठीक है. Okay जनाब, so let's start with this. कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे. कैन यू प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर? Question number 23. Read that question carefully and then we will solve this one. Okay beta, so in this question just
first of all, you have to write down the expression of Kp, which is the partial pressure of NO2 square, which is the product, divided by the partial pressure of N2O4. Now, very easy. All the partial pressure are given. The partial pressure of NO2 is 0.33. So this is 0.33 square divided by 0.67. And the answer is B. Check करो. 0.33 square divided by 0.67. The answer is A. स्क्वायर नहीं किया होगा. अच्छा, now you can realize that these type of questions are very tricky. ये जो options दिए हुए होते हैं ना, mostly ये random options नहीं given होते. If you didn't place the square, जो आंसर आएगा वो भी given होगा. तो हमसे मिस्टेक क्या होती है बेटा? We look at the our calculator screen और मैंने देखा 0.49 आया, ऑप्शन में गिवन है, टिक किया और आगे चले गए. तो हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं हो पाती. इसलिए याद रखिएगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर ट्रिकी इन अ वे. अच्छा, इन अ वे कि आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जगह बाय मिस्टेक इफ यू डू रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट जो करोगे वो भी ऑप्शन गिवन होगा. क्लियर? तो इसका ख्याल रखना है. गुड. नेक्स्ट वन, अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम N2O2 plus 2NO enthalpy change is positive is an endothermic chemical reaction. Okay, which factor would affect the value of Kp in the above equilibrium? The value of Kc and Kp is only affected by temperature. Change in pressure, no effect. Change in temperature, effect. Presence of catalyst, no effect. So the right answer is D. है ना? Only affected by temperature. A question which is related to the bonding and enthalpy change, not related to equilibrium, but let's see the question. Again, it says PCl5 dissociate to PCl3 and chlorine. Right? The extent of dissociation is 13% and 160 and 100% at higher temperature. So can I say that this dissociation should be an endothermic process? टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ रही है, ऐसा ही है ना? तो रिएक्शन तो एंडोथर्मिक हो गया. एंडोथर्मिक इज दिस वन एंड दिस वन. व्हाट शुड बी द शेप ऑफ PCl3? ट्राइगोनल, प्लेनर और पिरामिडल? इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्रॉम व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फास्फोरस बिलोंग. तो फास्फोरस इज प्रोटॉन नंबर 15. इट्स इन अ ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. If it is making 3 covalent bond with 3 chlorine, PCl3 की बात कर रहा हूं, it's making 3 covalent, there must be 1 lone pair. 3 bond pair, 1 lone pair के साथ trigonal planar shape नहीं होती. The shape is same as ammonia. Nitrogen and phosphorus belong to the same group, so it is basically A. The shape is pyramidal. Trigonal planar होती है when you have any group 3 element like BF3. The shape is trigonal planar because B3 group 3 का है. All 3 electrons are. देखिए, शेप प्रिडिक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर, मुश्किल नहीं है. एज आई सेड के जस्ट स्पेंड most of your time while you're revising this shape of a molecule towards a 4 pair of electrons. All 4 bond pair tetrahedral 109.5, 3 bond pair 1 lone pair, 4 bond pair का ही केस है. ठीक है? The shape is basically pyramidal with a bond angle of 107. 2 bond pair, 2 lone pair. Water molecule is an example. The shape is non-linear. V shape भी कहते हैं. The bond angle is 104.5. ठीक है? तो ये 3 आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए. बाकी एग्जाम्पल इससे मिलती जुलती. मैं आपसे H2O के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपने कहा सर 2 bond pair, 2 lone pair, नॉन लीनियर शेप होगी, V शेप होगी और द बॉन्ड एंगल इज 104 पॉइंट. एग्जाम में वो कहेगा ओके H2O नहीं, H2S के बारे में बताइए. H2S is exactly the same as H2O because oxygen and sulfur belong to the same group. तो शेप भी सेम होगी, बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट सेम होगा. ठीक है? क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. एसिड बेस इक्विलिब्रिया के बाद इसे सॉल्व करेंगे.
Is it visible? Yes. The percentage of ammonia obtained if the equilibrium were established during the Haber's process plotted against the operating pressure of two temperature 400 and 500 which diagram correctly represent the two graph. वैसे तो ये अब हमारे पास जो है वो लेकिन फिर किसी हद तक वैलिड है in a way that you should know that the Haber's process formation of ammonia is an exothermic process. ऐसा ही है ना? एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमोनिया की परसेंटेज बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी तो लेकिन कम बढ़ेगी, ठीक है। सो देखो सी और डी तो हो ही नहीं सकते ना, सी और डी तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आस्किंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ अमोनिया ऑब्टेन, मीन द फॉरवर्ड, दे टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता ना ये हो सकता, दिस इज बेसिकली द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया नॉट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। द राइट ऑप्शन आइदर ए और बी। सो देखो ए और बी में टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास डिसोसिएशन कम होगी बिकॉज द प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो द राइट ऑप्शन इज ए। लोअर टेम्परेचर पे यू विल गेट मोर अमोनिया एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। अच्छा ये बताइए मैंने सी और डी को एलिमिनेट किया, ये बात सेंस दे रही है ना? सी और डी इज, हाँ सी और डी बैकवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है विच इज द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया नॉट द फॉर्मेशन ऑफ NH3। सो द राइट ऑप्शन इज ए बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक process. The value for the equilibrium constant Kc for the reaction ethyl, ethanoate, ethanol and ethanoic acid is 4. When 1 mole of ethanol, 1 mole of, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक दफा दोबारा सीख लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इन व्हिच यू हैव द वैल्यू ऑफ Kc is given and they asking about the number of moles at equilibrium, ठीक है। So what I'm going to do, I'm just going to copy this equation back again. आपको जरूरत नहीं है लेकिन मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ because I have to explain it. CH3 CO2H forming CH3 CO2 C2H5. Which type of reaction it is? ये reaction पहले पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है? O levels organic formation of ester, alcohol and a carboxylic acid reacting. This reaction takes place in the presence of a strong acid. कौन से strong acid की presence में reaction होता है? Sulfuric acid. We add few drop of concentrated sulfuric acid. चले. Initially, how many moles are there? Read that question and let me know. 1 mole of ethanol, which is this one. 1 mole of ethanoic acid, which is this one, are allowed to reach at equilibrium. Means initially the product are 0. कुछ नहीं बोला ना product के बारे में. So initially the product are 0. Now at equilibrium, मैंने कहा let X be the moles of reactant converted to product. तो ये बन जाएगा X, ये बन जाएगा X, ये बचेगा 1 minus X, ये बचेगा 1 minus X. ठीक है? Now write down the Kc expression. So can I say that X multiply by X, which is product, divided by 1 minus X into 1 minus X is equals to Kc, which is given, and the value given is 4.0. Clear? So can I say that 4.0 is equals to X square divided by 1 minus X square. It become whole square. दूसरी तरफ 4 का अंडर रूट हो जाएगा. तो कैन आई से दैट x over 1 minus x whole square is equals to 4.0. x over 1 minus x is equals to under root 4 which is 2. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी जनाब? 2 times of 1 minus x. x is equals to 2 minus 2x. ठीक है, 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x is equals to 2 और x हो जाएगा आपके पास 2/3. हमने किया था. सो द राइट आंसर इज बी. ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ऑन कैंपस वाले अपनी आंखों से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आसान है. याद रखिएगा इन दिस कैलकुलेशन इन विच यू हैव Kc गिवन, अगर आपको Kc गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, ये बात याद रखिएगा. बिकॉज कैम्ब्रिज का फॉर्मेट नहीं है कि इस x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट्स क्लियरली रिटन इन अ सिलेबस दैट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते हुए इस पोजीशन पर आ गए
कि आपको रियलाइज हो कि आई हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट गलत किया। ठीक है, तो दोबारा से उसे देखना पड़ेगा। दिस इज राइट। ओके, द सिमिलर फॉर्मेट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो इजी हैं। ओके, देखिए, आई रिकमेंड दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट मैं एक ऑप्शन को सॉल्व करके दे रहा हूं, बाकी ऑप्शंस आप सॉल्व करेंगे एंड देन डू लेट मी नो अबाउट द राइट आंसर। रीड दैट क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली। इसने कहा इनिशियली 2 moles ऑफ कंपाउंड पी वर प्लेस्ड इन अ वेसल। ठीक है, पी के इनिशियल यानी क्यू और आर नहीं लिए उसने, सिर्फ पी लिया है, ऐसा ही है ना। The compound P was partially decomposed by heating. A dynamic equilibrium between compound P, Q, and R was established. At equilibrium, X moles of R were present. At equilibrium, X moles of R were present. Total number of moles P, Q, and R सबको ऐड करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास? 2 plus X. Which of these equation give 2 plus X? Means we have to solve these equation one by one. So let me just solve the first equation, option A first, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। So option A है जनाब P forming 2Q plus R। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई इशू नहीं होगा। इनिशियली हाउ मेनी मोल्स ऑफ P? 2 moles। क्यू के कितने मोल्स हैं? 0, और इसके कितने मोल्स हैं? 0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम उसने कहा एक्स मोल्स ऑफ आर प्रेजेंट, ऐसे ही ना। तो क्यू कितना प्रेजेंट होगा? क्यू मस्ट बी 2x, 1:2 है। ठीक है, और पी कितना यूज्ड अप हुआ होगा? 1:1 है बिटवीन आर एंड पी। तो जितना आर बना है उतना ही पी यूज्ड अप हुआ होगा। इफ इट वुड बी 1:2 तो 2x माइनस करता, अगर p के साथ 2 लगा होता तो -2x। ठीक है, क्लियर। नाउ दीज आर द मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, एड देम अप टू गेट द टोटल मोल्स। ठीक है, सो आप देख रहे हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 plus 2x, which is not the right answer। बचना क्या चाहिए? 2 plus x। Now solve option B, C, and D and give me the right answer. Okay, beta. So let's solve the option number B. 2, this is B, 2P forming 2Q plus R। ठीक है बेटा। Now initially 2 moles, 0 moles, 0 moles, at equilibrium R के X moles हैं। So R and Q is 1:2, so it must be 2x moles, and R and P is 1:2, तो हम 2x माइनस करेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हमेशा ये किया करें, P रेशियो R, which is 2:1। So to make x moles of R, P के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 2x। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब इनिशियल मोल्स में से 2x moles are getting used up in making x moles of R। यहां तक क्लियर है? इन सबको ऐड कीजिए, so you'll get 2x, 2x get cancel out, and 2 plus x is the total number of moles, and which is excellent बेटा, ऑनलाइन से आंसर आ गया था मेरे पास। गुड, so the right answer is B। क्लियर, कीपिंग दिस क्वेश्चन इन माइंड, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में देखिए। अब अच्छी प्रैक्टिस कब होगी? इफ आई कीप एवरीथिंग सेम, इफ आई जस्ट चेंज द मोलर रेशियो, यानी इसमें तो जैसे 2p plus 2q plus r है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। नाउ सॉल्व दिस वन, 47। Okay, but to solve this one, we solved the option A, which was the wrong one. Let's solve the option number D.
which is the right answer. So let's see how we obtain this right answer. 2R. Okay. Now it says initially 2 moles of this, 0 moles of this, 0 moles of this. At equilibrium, you have X moles of R present. Okay. तो जितना R है उसका half आपके पास होगा Q. ठीक है. And there's a same molar ratio between P and R. So 2 minus X must be. If you add all these to get the total number of moles at equilibrium, X get cancel out. The answer is 2 plus X over 2. Can you get it now? Easy है? ठीक है? Good. Same format पे there is अब चूंकि इस format की आपने practice कर ली है, so let's move forward towards this one, this one, this one, this one, this one. Yeah, this one. It is a slightly lengthy question, लेकिन make sure कि आपको ये बात याद रहे कि the pressure of the system is P. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide had dissociated. ठीक है. इनिशियली आपके पास B moles of hydrogen iodide present थे, यानी इक्विलिब्रियम पे B माइनस एक्स हो जाएगा और फिर वो X जाएगा प्रोडक्ट साइड पे. 1:1 होगा तो X बनेगा, 1:2 होगा तो 2X बनेगा. ठीक है. कीपिंग दिस वन इन माइंड, जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन आई विल सॉल्व इट. देखिए बेटा, यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन अगेन. मैं खुद लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए. टू HI forming H2 plus I2. And it says that initially you have B moles of hydrogen iodide. Means hydrogen and iodine are 0, 0. Put in a seal at a pressure of P, total pressure P है. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide dissociated. यानी B में से X moles dissociate हो गए. तो 2:1 के accordingly, if X moles of hydrogen iodide getting dissociated, we'll get the half moles of hydrogen and half moles of iodine. So these are basically the moles at equilibrium. If I add them up to get the total moles at equilibrium, so it must be B minus X plus X over 2 plus X over 2, which is equals to ये X over 2 तो 1 हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेंगे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम? B. B क्या है? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम. ये बात याद रखिएगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की. तो इट मस्ट बी B minus X, which is the moles divided by total moles multiplied by total pressure. Partial pressure of hydrogen is equals to X over 2 divided by B multiplied by P. Partial pressure of iodine भी same होगा बेटा. Good. अब B multiply by P. अच्छा, मैं इससे X over 2B कर सकता हूँ. 2B है ना. ये देखें, अगर इफ इट इज X over 2 over B लिखा हुआ है तो कैन आई राइट इट X over 2B? इट्स द सेम थिंग है ना. लिख सकते हैं. चलो अभी नहीं लिखते, ज्यादा परेशानी से बचने के लिए. नाउ Kp is equals to partial pressure of hydrogen, which is X over 2 over B into P multiplied by X over 2 over B into P divided by B minus X over B हाँ into P का होल स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं थोड़ा सा, इफ आई लुक एट इट, तो बहुत क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि ये पी स्क्वायर बनेगा. ठीक है. चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. और कैन आई से दैट इट बिकम एक्स स्क्वायर ओवर 4 ओवर बी स्क्वायर. चलो हम इसको ओवर होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर कर लेते हैं. एक्स ओवर 2 ओवर बी इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
b माइनस एक्स ओवर b इंटू p का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पी स्क्वायर तो कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2b 4b स्क्वायर। शुक्रिया मेरे भाई। ठीक है, स्क्वायर खोल दिया ना दोनों पे, सब पे स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब कैंसिल आउट करते हैं, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो बाकी क्या बचेगा। बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बी। तो ये बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है, देयर इज ओनली वन इक्वेशन जिसमें पी, सॉरी देयर आर टू इक्वेशन जिनमें पी नहीं आ रहा, और इन दोनों ऑप्शन में पी है। ठीक है, और सिर्फ आपको ए और डी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? थोड़ी सी वर्किंग है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आपको फर्स्ट गो में नहीं करना, यू हैव टू डू द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ दिस कैलकुलेशन। केपी की एक, हाँ देखिए, एवरीथिंग यू हैव टू प्लग इन द केपी एंड देन यू हैव टू गेट फाइनल आंसर ऑफ इट। ठीक है जी। वन मोर, ये मैंने हमने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, याद करो, लास्ट है ना। एक क्वेश्चन और बस, वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ऑल्दो वी हैव डन दिस वन, लेकिन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज लास्ट वन फॉर टुडे। 2H2O forming 2H2 plus O2। ठीक है बेटा। In one experiment, 1 atm pressure, it was found that 20% of the steam had been dissociated। ठीक है ना। सो मैंने कहा चलो जनाब इनिशियली 100 ले लेते हैं। 1 का 20% मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना, 0.2 हो जाएगा और 0.8 हो जाएगा, जो कि नीचे नजर आ रहा है ऑप्शंस में। अगर ये 20% डिसोसिएट हुआ है, सो बाकी कितना बचेगा? 0 और ये कितना बनेगा? H2 0.2 विच इज 1:1। ऑक्सीजन कितना बनेगा? 0.1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम मेरे पास आ गए 1.1। ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.1। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल तो 1 मोल्स थे, आफ्टर रिएक्शन बढ़ कैसे गए? तो यस, अ सिंगल प्रोडक्ट इज गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1.1। इफ यू टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, कैसे निकलेगा जनाब? 0.8 divided by 1.1 multiply by total pressure which is 1। total pressure 1, ये रहा गिवन है। क्लियर? सो आंसर कौन सा होना चाहिए? द ओनली ऑप्शन इन विच यू कैन सी 1.1 इज डी, है ना। किसी और में भी, किसी में भी 1.1 नहीं आ रहा। क्लियर? so just a good practice of this one is required। obviously after completing this chapter we'll do some more question and then वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि काफी हद तक मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, सो वी कीप इट टिल आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।